Hello everyone. Today we will study about area and its boundary. आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड इट्स बाउंड्री के बारे में. In this chapter we will first study about perimeter. Now we will study what is perimeter. Let us now study what is perimeter. Perimeter is the length of the boundary of a closed figure. Perimeter होता है लेंथ उस बाउंड्री की जो बाउंड्री है क्लोज फिगर की. अब देखते हैं हम कि क्लोज फिगर क्या होता है और बाउंड्री का क्या मतलब होता है और पेरीमीटर का क्या मतलब होता है. फर्स्ट लेट अस लर्न अबाउट व्हाट इज अ क्लोज फिगर. सी, a figure which is not open from any end is called a closed figure. इसका मतलब है एक फिगर जो सब तरफ से बंद हो और कहीं से भी खुली ना हो वो क्लोज फिगर होती है. इस चैप्टर में हम उन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन फिगर्स का पेरीमीटर निकालेंगे जो स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं और क्लोज्ड होती हैं. In this chapter, we will find out the perimeter of the figures which are closed and made up of straight lines. Now let us learn what is a perimeter. We can see that perimeter is the length of the boundary of a closed figure. This means we will add all the boundaries that is the outline of the given figure and find out its perimeter. This means perimeter is the sum of all the outlines that is the boundary of a given figure. मतलब बाउंड्री क्या होती है हमारी, ये जो आउटलाइन है ये बाउंड्री है. ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया एक रेक्टेंगल का. आगे हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे. तो ये बाउंड्री क्या हुई, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब इसकी क्या लेंथ है. इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर. तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, इसका पेरीमीटर हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. Now let us see how to find out the perimeter. 7 plus 4 plus 7 plus 4 that is 22 centimeter. Okay, remember that you have to write the unit. Unit is the unit of the measurement of the boundary. जो बाउंड्री है उसका मेजरमेंट का जो यूनिट है, इसमें जैसे सेंटीमीटर है, कोई और सम्स में मीटर होगा, कोई और सम्स में किलोमीटर भी हो सकता है, तो वो हमें आंसर में लिखना ज़रूरी है. Let us take another example. You can see this is a triangle having sides 8 meters, 9 meters and 6 meters. ये एक ट्राइंगल है जो कि एक क्लोज्ड फिगर है. देख सकते हैं आप, कहीं से भी ओपन नहीं है और उसकी साइड्स हैं 8 मीटर्स, 9 मीटर्स और 6 मीटर्स. अब हम इनका पेरीमीटर निकालेंगे. Now we will take out the perimeter of this triangle. What we will do is to write all the sides with a plus sign. 6 meters plus 8 meters plus 9 meters. Now we will add them and find out the length of the boundary, that is the total of all the three lengths which will give us the perimeter. हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और निकालेंगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो कि है हमारा पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल. and we get the answer as 23
meters. Now see, the unit of length of the sides is meters here. So the answer will also have the unit as meters. Be careful about that कि अगर हमारा जो लेंथ है साइड्स का वो मीटर्स में है तो जो आंसर निकलेगा पेरीमीटर वो भी मीटर में ही होगा. Let us take an example of a park. This is a park, a big park. Can you tell what is the name of this figure which is made? Yes, it's a square. How do you know it is a square? Because all the four sides of this figure are equal. So this is a square park and I want to know what is the perimeter of this square park. If I start moving from here and go here, then here, then here and reach back here, how many kilometers have I traveled? What is the distance covered by me? अगर मैं यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो डिस्टेंस भी पेरीमीटर ही होता है. ओके, तो इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा उतना ही डिस्टेंस मैं ट्रैवल करूँगी. सपोज़ ये पार्क दिया हुआ है मुझे जिसकी एक साइड दी हुआ है 8 किलोमीटर्स और ये स्क्वायर पार्क है, तो इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि चारों साइड्स 8 किलोमीटर्स की ही हैं. अब निकालते हैं इसका पेरीमीटर. लेट्स फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर पार्क. ओके, नाउ वी हैव रिटन the perimeter is equals to 8 kilometers plus 8 kilometers plus 8 kilometers plus 8 kilometers, and after adding we get the answer as 32 kilometers. Yes, as the lengths are given in kilometers, so we will write the answer of the perimeter also in kilometers. It is also obvious that if we are adding kilometers, we will get kilometers only. Now let us look at this figure. In this figure, we can see that they look like a step, okay, in which length of this side, this and this is given, but length of this and this side is not given. So how will we find out the perimeter? Let us see. Now we know that length of this side is 2. So from here to here, this portion, the length is 2. Then we will take this portion. This is 2 centimeter, then again 2. Then this is 2 centimeter, again 2, and this is also 2 centimeters, so again 2. So the length of this side will be 2 centimeters, 2 centimeters, 2 centimeters and 2 centimeters. What is the total length of this side? It will be 2 plus 2 plus 2 plus 2. That is total 8 centimeters. Yes, length of this total side is 8 centimeters. Similarly, we will see that this length is 2 centimeters. This is also 2 centimeters. This is also 2 centimeters. And this is also 2 centimeters. So we have seen that this 2 centimeter is, this is also 2 centimeter, this is also 2 centimeter and this is also 2 centimeter. So what is the total length?
We get the total length as 8 centimeter. How did we find that? We found that by adding 2 centimeters, 2 centimeters, 2 centimeters and 2 centimeters. Now we have got the total length of this figure, which is 8 centimeter, 8 centimeter, 2 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 centimeter and 2 centimeter. We will find out the perimeter of this figure by adding all these sides. Now we have written perimeter is equals to 8 centimeter plus 8 centimeter plus 2 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 centimeters. Now by adding all these, we will get the answer as 32 centimeters, which is the perimeter of this whole figure. I hope that you have understood the concept of perimeter. Thank you.